Assalamu alaikum. If we are working in a firm and our boss ordered us कि भाई हमारे पास जो orders है ना हमने उनका per region निकालना है अभी. So how can we do it? हमारे पास state हो, region हो, items हो, units हो, unit per cost हो, and we have total column. And we have to find out the number of orders per region. So how can we find out with the help of Excel? So here is the result. हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड देन वी गॉट अ रिजल्ट. अच्छा, वी हैव 3 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल. हम सिंपली काउंट इफ का फार्मूला डालेंगे इसमें एंड विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ फार्मूला वी विल फाइंड आवर एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमारे क्लाइंट की है, जो हमारे बॉस की नीड है. इज इक्वल टू काउंट इफ सिंपली हम यहाँ पे उसका फार्मूला प्लेस करेंगे, range and criteria. As we all know, range define the cell to be counted. जो सेल होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए होता है कि हम उसको काउंट कर सकें. So we have regions का column, comma. So what is criteria? Criteria is a condition that tells the function which cells to count. एक ऐसी कंडीशन जो फंक्शन को बताती है कि कौन से सेल को हमने काउंट करना है. सो हमने कौन सा सेल उठाना है काउंट करने के लिए, तो हम डिसाइड कर लेते हैं. लाइक हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. See, we have the result. हम इसको ट्रैक करेंगे. इन दिस केस द रीजन ओरिजिन ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो कितने हैं, 13 ईस्ट के. Again same thing in west. Count if का formula and then we will put it in west. अब रेंज और क्राइटेरिया को आई थिंक मुझे दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. We have west को result which is 6 and then we put the same thing in central like in E column. central का सेल जो E है हमारे पास उसमें. And then we have the result. We have the final result.
central inverted commas, and then bracket close and enter. And we have the result, that is 24. Here is the result. So we have our final result with the help of Excel within few minutes, like few seconds. ये स्लो में होता है बिकॉज अगर कोई स्टेप रह जाए तो हम उसको देख सकें with the help of video. Otherwise we have our result in single second.